अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ऑड फंक्शन के केस में माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। जैसे लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, देन एफ ऑफ माइनस एक्स इज बेसिकली माइनस एक्स क्यूब। इट मीन्स कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स, देन यू कैन से एफ दिस इज ए ऑड फंक्शन, राइट, odd function. And also say graph of an odd function, graph of an odd function is symmetrical in opposite quadrant. इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो ग्राफ होगा वो सिमिलर ग्राफ का थर्ड में और सेकंड का फोर्थ में, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ आप देखेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बेसिकली ये अपोजिट है, सो दिस बेसिकली y इक्वल टू एक्स क्यू इज ऑड फंक्शन। आप ग्राफ से देख सकते हो कि अपोजिट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वी कैन से कि ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अगर आप जीरो से अपवर्ड जाएंगे और डाउनवर्ड दोनों सिमेट्रिकल आपको मिलेगा ग्राफ। जैसे अगर y इक्वल टू एक्स, अगर एक ग्राफ देख रहे हैं y इक्वल टू एक्स, तो जो आप y इक्वल टू एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, राइट, f of minus f, and you can see the by the graph key is symmetrical about origin. So odd function is symmetrical about origin. So note down graph of odd function, odd functions here function are symmetrical about origin. जैसे अगर आप y इक्वल टू साइन एक्स, एक ऐसा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स, श्वेता, it's an odd function. yeah, you know the graph of sin x. Now explaining even function. First important thing is even function is y equal f of x minus x equal to f of x. जैसे अगर f of x, let's suppose if function is f of x is equal to x square. So now f of minus x is also minus x whole square, that is x square. So f of minus x equal to x square, so f of x, then we can say is even function, right? Even function. Y equal to f of x equal to, let's suppose cos x. Is it odd function or even function? Even function. Yeah, even function. And y equal to mod of x. Y equal to mod of x. This is an even function or odd function? Even function. Even. So every even function is symmetrical about y-axis. You can see y equal to x square graph is look like parabola, upward parabola, y equal to x square. This is just symmetrical about x-axis. Basically y-axis के about mirror image है, right? And जिसे आप y equal to mod of x का ग्राफ बनाएंगे, this is also symmetrical about y-axis. Y-x. This is a graph of y equal to mod of x. So every even function is, the graph of even function is symmetrical about y-axis. So note down, note point. So graphs of even function are symmetrical about
y-axis. क्लियर है श्रुता? क्लियर है? Yes, sir. कोई एक ऐसा फंक्शन बता सकते हैं जो कि ऑड है एंड इवन बोथ? I'm not sure, sir. If x equal to 0 is a odd and even both function, right? So note down, note point. The only function which is both odd and even is fx equal to 0. 0 function is basically both odd and even. Point product of odd and even function का प्रोडक्ट क्या आएगा श्वेता? कैसा फंक्शन आएगा? प्रोडक्ट्स ऑफ ऑड एंड even function is odd or even function? Odd Odd function. function. Yeah. एवरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन को आप ऑड एंड इवन के टर्म में आप लिख सकते हैं. सो एवरी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन. अगर आप कोई भी फंक्शन है, अगर आप डेरिवेटिव करेंगे इवन फंक्शन का, अगर लेट्स सपोज डेरिवेटिव करेंगे तो ऑड फंक्शन मिलेगा, राइट? अगर ऑड का डेरिवेटिव करेंगे तो इवन फंक्शन मिलेगा. जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इक्वल टू एक्स क्यू इज ए ऑड फंक्शन, बट उसका डेरिवेटिव जो होगा 3x² वो ऑलवेज जो इवन फंक्शन आएगा, राइट? तो डेरिवेटिव करने से क्या होता है? फंक्शन चेंज हो जाता है, राइट? ऑड टू इवन, इवन टू ऑड. क्लियर है श्वेता? Yes, sir. सो लिखने की जरूरत है, स्किप कर दो. Sir, are you presenting your screen? Oh, okay. I am presenting. So, now visible. Yes, sir. Okay. See. So clear है Sir, ना it कि just, yeah. yeah, Yeah, it's clear. derivative. Okay. Now हो गया श्रीता? Done. Yes, sir. Now question is, if f is an even function, then find the real value of x, real value of x satisfying the equation fx equal to x plus 1, f of x plus 1 upon x plus 2.
Sir, how do we solve the first question? First question, okay. Simple f of x equal to minus f of minus x equal to f of x का अप्रोच जो बनने बताया था सबसे पहला पॉइंट इवन फंक्शन क्या बोला है दिस इज f of x is basically even function find the real value of x satisfying the equation f is an even function बोला है राइट मतलब f of minus x equal to f of x होगा राइट f of minus x equal to f of x इट मीन्स क्या है कि x इक्वल टू x प्लस वन x प्लस टू एक होगा एंड माइनस ऑफ x इज ऑल्सो x प्लस वन अपॉन x प्लस टू दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए x का वैल्यू आ जाएगा दोनों को फंक्शन इक्वल है इट मीन्स कि इफ x इक्वल टू इनसाइड द जो है वो इनपुट डाल रहे हैं वो इक्वल है राइट और अगर माइनस x भी डाल रहे हैं तो सेम ही है सो इफ x इक्वल टू x प्लस वन अपॉन x प्लस टू होगा फर्स्ट एंड माइनस x इक्वल टू ऑल्सो x प्लस वन अपॉन x प्लस टू तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए दोनों से क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा इक्वेशन अगर फर्स्ट को लेकर चले तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन is equal to 0. So x is equal to minus 1 plus minus root under b square 1 plus 4 by 2. So minus 1 plus minus root 5 by 2 x equal to. अगर आप सेकंड को सॉल्व करेंगे so now minus x square minus का 2x is equal to x plus 1. So solve it. X square plus 3x plus 1 equal to 0. Now x equal to minus 3 plus minus root under b square 9 minus 4 upon 2. So minus 3 plus minus root 5 by 2. So x is equal to basically final answer is minus 1 plus root 5 by 2 minus 1 minus root 5 by 2 minus 3 plus root 5 by 2 minus 3 minus root 5 by 2. This is a 4 value of x. This is a even function. श्रुता क्लियर है? Yes, sir. Any doubt? Second try कीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन. Second is very good question. यहाँ पे आपका इंटीजर फंक्शन एवरीथिंग यूज हो जाएगा आपका. आपको और इवन चेक करना है तो आप f ऑफ x को माइनस x से रिप्लेस करके देखेंगे अगर f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x है देन यू कैन से कि इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस का f ऑफ x देन यू कैन से कि ऑड फंक्शन अगर आपको भी फंक्शन को चेक करना है कि दिस इज ऑड फंक्शन और इवन यू कैन अप्रोच f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x और f ऑफ माइनस x इक्वल टू f माइनस का f ऑफ x you can say odd or even function. यहाँ पे आपको बताना है कि odd function है और even function है. Are you trying to do सीधा और मैं explain कर दूं? Sir, I'm trying to. Okay, do that.
ग्रेटेस्ट फंक्शन का यूज कर लीजिए। देखिए x अपॉन पाई प्लस पाई 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 बाई पाई 1, और ग्रेटर फंक्शन का यूज कर लिया। आपको बताए थे x प्लस आई इज इक्वल टू ग्रेटर x प्लस आई लिख सकते हैं, उसका यूज कीजिए। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए तो पता चलेगा। Sir, is it an odd function? Yeah, odd function. Very good. Correct. Odd function. Good. Now, periodic function. Do you know about periodic function? Shweta? No, sir. So now a definition is a function fx is said to be periodic function if there exists a positive real number t such that f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to domain of f. Then we can say fx is periodic. Fx is periodic with period t, where t is least positive value. और ग्राफिकली आप कैसे समझेंगे, जैसे अगर जितने टाइम ग्राफ रिपीट कर रहा हो जितने इंटरवल के बाद, देन वी कैन से कि पीरियोडिक है। एंड पीरियडिक विथ जो होगा वो बेसिकली पीरियड होगा। जैसे अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का, तो कुछ ग्राफ इस तरह से होता है साइन एक्स का, राइट। साइन एक्स का ग्राफ कितने के बाद रिपीट करता है, कितने इंटरवल के बाद। विथ क्या होता है जिसके लिए रिपीट कर रहा है, बेसिकली देखिए 2 pi. 2 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई।
एवरी 2 पाई पे ये ग्राफ जो है वो रिपीट कर रहा है, सो पीरियड इज 2 पाई। और वी कैन आल्सो से कि एफ ऑफ, मैं बोला कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, देन टी इज कॉल्ड पीरियड, राइट। सो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर मैं साइन एक्स फंक्शन लूं, तो अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी निकालूं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, देन अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा उतन से कि पीरियोडिक विथ पीरियड इज टी, तो इसका पीरियड एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई से रिप्लेस कीजिए, वी गेट साइन एक्स प्लस 2 पाई, also this is sin x, so period is basically period is equal to 2 पाई, period is equal to 2 पाई। श्रुता क्लियर है? Yes, sir. और अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2टी, इसी तरह से एफ ऑफ एक्स प्लस 3टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी, फॉर ऑल n belongs to integer, periods is t। Now some important points, some important points, sin x cos x sec x and cosec x का पीरियड क्या होगा? डू यू नो? sin x cosec x sec x, सॉरी, cos x sec x period is equal to r periodic with periodic function with period, 2 pi. yeah, period is equal to 2 पाई। tan x और cot x period is tan x and cot x, tan x cot x is periodic with period, Pi. yeah, very good, period pi। Now mod of sin x, mod of cos x, mod of tan x, mod of cot x, mod of sec x, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फंक्शन है 6, ऑल 6, इसका पीरियड क्या होगा मॉड लगाने के बाद? आर पीरियोडिक विथ पीरियड, Pi. या विथ पीरियड पाई, Pi. आंशिक पाई, या वेरी गुड, पीरियड पाई, यस करेक्ट, वेरी गुड। Now next point, sin n power x, cos n power x, sec n power x, cosec n power x are periodic functions with period, क्या क्या पीरियड्स हो सकता है श्रुता? जैसे पीरियड इक्वल टू 2 पाई और पाई, अकॉर्डिंग टू एज n इज ऑड और इवन, अकॉर्डिंग ऑड और इवन पे डिपेंड करेगा कि फंक्शन n का वैल्यू ऑड है या इवन, अकॉर्डिंग एज n इज ऑड और इवन। नोट पॉइंट, tan nx cot nx are periodic function with period pi, whether n is odd और इवन, n odd हो या इवन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, पीरियड हमेशा पाई होगा, इज ऑड और इवन।
श्रुता क्लियर है यहाँ तक? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर है? Yes, sir. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक with period t, then a times f of x, a times f of x is periodic with period is equal to, बताइए, पीरियड इज इक्वल टू टी, बट ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होगा, अगर ए जीरो होगा तो फंक्शन ही जीरो हो जाएगा। सो ए टाइम्स सम कांस्टेंट अगर आप फंक्शन में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो पीरियड चेंज नहीं होगा, राइट? इज अ पॉइंट। अगर आप ऐड करेंगे फंक्शन में एक कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, देन इज ए पीरियोडिक विथ पीरियड टी, इज पीरियोडिक ही होगा विथ पीरियड टी, विथ पीरियड टी। अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी करेंगे, देन आल्सो पीरियड इज इक्वल टू सेम टी। अगर आप एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी फंक्शन है, इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड क्या होगा? पीरियड इज इक्वल टू टी बाई ए, मॉड ऑफ ए। जैसे इसमें एग्जांपल देख लीजिए, साइन 2x का पीरियड क्या होगा? साइन 2x का जो पीरियड होगा बेसिकली 2 पाई पीरियड साइन x का होता है, बाई 2 कांस्टेंट जो a है वो 2 है तो डिवाइड करता हूं, इसका पीरियड पाई आएगा साइन 2x का। साइन 4x का पीरियड क्या आएगा? साइन 4x का पीरियड आएगा 2 पाई बाय 4, पाई बाय 2 आएगा। क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. वेर ए बी क्या है? इसमें फंक्शन में ए बी क्या है? ए बी बेसिकली कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स है, और ए नॉट इक्वल टू जीरो। Now second note point, second properties, if fx and gx दो वो फंक्शन है, if fx gx is periodic function, is periodic functions, periodic functions with periods t1 and t2, t1 and t2 respectively, then normally fx plus gx or fx minus gx, fx into gx, fx upon gx, where gx not equal to 0, gx not equal to 0, with will be periodic with period with fundamental period periods equal to fundamental period equal to LCM of T1 and T2, LCM of T1 and T2, T1 और T2 का जो LCM होगा वही फंडामेंटल पीरियड होगा, fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, fx by gx।
बट इसमें एक्सेप्शन भी है कि हमें फंडामेंटल पीरियड लेस देन द एलसीएम भी हो सकता है, लिख लीजिए। बट नोट डाउन, बट एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ हैविंग ए फंडामेंटल पीरियड less than the LCM may occur. यहाँ तक क्लियर है श्वेता? इसको जस्ट देख लीजिए। Any doubt you can ask. Just see second point, fx gx is periodic. श्वेता, डू यू नो रेशनल और इरेशनल फंक्शन का क्या एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? No, sir. ओके, बट एलसीएम ऑफ इरेशनल विथ irrational is possible or not? No, sir. LCM of irrational with irrational is possible but not always. हमेशा नहीं होगा। जैसे अगर आपका 2 पाई और 4 पाई, 2 पाई कैसा है, irrational, 4 पाई भी also irrational, LCM is 4 पाई, you can say 2 पाई 4 पाई का LCM 4 पाई। अगर 2 पाई 6 पाई, LCM is 6 पाई, right? But now 2 पाई 1 and 6 पाई, LCM is not possible. So rational or irrational का LCM is not possible. Rational LCM is possible, and rational or irrational LCM is not possible. Right? I'm getting the point. Clear है? Yes, sir. And do you know LCM of A? Let's suppose A by B, C by D, E by F. How to find out LCM? A by B, C by D, E by F fraction. LCM. Note point. LCM of A by B, C by D, E by F is equal to LCM of A, C, E upon HCF of, आपने 18th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, B नोमिनेटर का LCM अपॉन डिनोमिनेटर का HCF, BDF। क्लियर है श्वेता? Also note down third point. A constant function is periodic or not? Say Sridhar, say the answer. A constant function is periodic or not? Yes, sir. But fundamental period does not have any fundamental period. But does not have any, not have fundamental period. Fundamental period constant का नहीं होगा। If
G is a periodic function. G जो है, let Gx is periodic function. Periodic function. Then FOG आप composite function आप पढ़ाऊंगा आगे next. FOG composite function will be always be a periodic function. But period of FOG may or may not be the period of G. अगर G is a periodic function, then FOG is a periodic function always. But जो period of FOG होगा, we can't say कि period जो G का होगा, GX function का. So period of FOG function fog may or may not be period of G. Period of G. Clear है Shrutha? Or any doubt? Now I'm giving question or we will do the question in the next class. I think time is over. Shrutha? Yes, sir. Now I'm writing HW question. We can do that. First is fx is equal to sin x. Homework question period बताना है. Find the period. Find the period of the following. First is sin x by 2 plus cos x by 3. Second is fx is equal to fractional part of x plus sin x. Fractional part of x का period क्या होता है? Do you know Shrutha? Fractional part of x का period क्या होता है? No, sir. 1. कल ही बताया था ना yesterday. फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 अप्लाई करता है ग्राफ से आपको. We can do that 7th HW question written. Take the screenshot. Okay, sir. Okay, bye. Good night. Thank you, sir. Welcome.